warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to speak few words related to today's occasion. Today we celebrate our farewell as this day is to goodbye everybody. This is last moment of our school. We don't know after many times how we will meet each other. Respected madam, teachers and all my dear friends, we will miss you every time after this occasion as we don't know when we will come in this school. Wish you everybody for their future all the best. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जो ना होंगे यहाँ कल, याद आएंगे जो गुजरे थे साथ पल. Seeing you all every morning is what I'll miss the most. Asking for extra pencil, sharing the lunch, copying from the homework from others' book, discussing most important questions before exam, missing friends in vacation. This is how we grew up. It went by fast, just like our parents said it would. No matter how hard we will try, but we will never get those days back that we had spent together, making the classroom a concert, writing names on the blackboard. The best thing I'll miss will be the free lectures with you all guys. जब हम इस स्कूल में आए थे तब ये पिंजरा लग रहा था, पर अब जब हमें इस पिंजरे से आज़ादी मिल रही है तो इस पिंजरे से भी प्यार हो गया है. Everyone would have heard this line, but today we are feeling it. Summers तो होंगी पर समर वेकेशन नहीं होगी, हॉलीडेज तो होगी पर हॉलीडे हैप्पी हॉलीडे नहीं होगी, खाना तो खाएंगे पर एक दूसरे के टिफिन से नहीं, मैसेज तो रोज करेंगे पर ये नहीं पूछेंगे कि कल आ रही है या नहीं. This is going to be the end of an era. Seems like the best time of our lives. जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, ये कौन जानता है कौन किस जगह होगा. ऐ बिछड़ने वालों तुम्हें देख देख सोचती हूँ, ऐ बिछड़ने वालों तुम्हें देख देख सोचती हूँ, तो फिर मिलेगी तो कितनी बदल चुकी होगी. Gonna miss you all so much. Thank you. Teachers and all my dear friends, my name is Afrin Sarwar Ali Khan from 10C. I come before you today with a lot of emotions, even though usually I am not a very emotional girl. This is the last time I will be addressing you all in this session. Furthermore, I have a lot of memories of this place, which shall remain with me till my dying day. I am sure that you will all also carry these memories until the day end of your lives. This beautiful school will always be an important part and parcel of our lives. Our school gave us precious memories that are truly priceless. The day when I walked first into the school premises is still fresh and new in my mind. At that time, life felt so difficult and hard. Little did we knew that those were the best days of our lives. We will miss those little moments of fun where the playing in the ground, chilling in the recess or chatting in the corridors. Who can forget it, the highly awaited and anticipated school bell for recess time? We will all rush out of the classroom as if we were like animals in a cage. Moreover, that feeling of the day was even more exciting. Now, of course, all of that will be left behind. Friendship and social interactions are one of the best aspects of school life. There is a belief which I think you all will agree with. This belief is that friendship, whose formation takes place at childhood, is certainly the strongest. Most noteworthy, there is a widespread belief that school friendships are truly unbreakable. So no matter how hard life gets, we will never abandon our school friends. On this very special day, let's all make a promise that we will always stay in touch with our friends. Do you think I will end this speech without acknowledging our teachers? Well, this is simply impossible. Dear teachers, what we are today is because of you. The knowledge that you imparted to us is one of the most valuable things in our lives. This knowledge that you gave us will be a weapon for the life ahead. Respected teachers, you occupy a very high status in the life of every student. Dear friends, students and teachers, this is a day of celebration. Let us make this farewell the best farewell in the history of our school. Some tears will be shed, some smiles will be shed as we bid farewell to our school life. You will always relish this moment for the rest of your life. स्कूल के दिनों में हमने बड़े सपने सजाए, स्कूल के दिनों में हमने बड़े सपने सजाए, अब उन्हें पूरा करने की राह में चल पड़े. आज अलविदा कहते हैं स्कूल की यादों के साथ, आज अलविदा कहते हैं स्कूल की यादों के साथ, नए सपनों की खोज में हम निकल पड़े आज. माय डियर फ्रेंड्स, बचपन का दिन, जी हाँ, हमारे स्कूल जहाँ जाने का डर लगता था, पर आज यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा. याद है वो पहला दिन जब मम्मा ने कितने प्यार से बालों को संवारा था, बाबा ने चॉकलेट का लालच देकर स्कूल में छोड़ा था. मुझे समझ नहीं आ रहा आज से 10 साल पहली वाली शुरुआत से शुरू करूँ या अब नई शुरुआत से शुरू करूँ. ये जो पल हमने साथ में गुजारा है तो ना तेरा था ना मेरा. सबसे पहले मैं अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारी रहनुमाई की और हमेशा हमारा साथ दिया. आप लोगों की वजह से ही हम हर मुश्किल का सामना कर पाए.
नहीं होगी। आज हम अलविदा कह रहे हैं, लेकिन ये दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। हर मोड़ पर हम साथ रहेंगे, ये यारी कभी जुदा नहीं होगी। आज हम अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो एक आखिरी शायरी बोलकर मैं मेरी बात यहीं खत्म कर रही हूँ कि किस हद तक जाएंगे ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाएंगे ये कौन जानता है। दोस्ती की दो पल जी भर के जीना है। ए दोस्त, ये दोस्ती हमेशा कायम रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार इस दोस्ती में ही होता है। My thoughts. I just say that thanks to all the teachers who had led the stairs of success each step at a time, and I'd say that everybody has up and down of like good marks, bad marks, but it depends on us how we perceive it. At the end, I'd like to end my speech with "In years through, our memories may still shine bright." Thank you. It feels unreal that we are standing here today, saying goodbye to a place that has been our second home. These years have been filled with joy, challenges, and so many unforgettable experiences. We have learned so much, not just from our books, but from each other. I want to thank our teachers for guiding us, and our friends for the support, and our families that believe in us. As we take the next step into the journey of life, I hope we all find success, happiness, and continue to grow. One more thing, this isn't the end, it's just a new beginning. Thank you, and good luck to all of us. Good afternoon, everyone. Today is an emotional day as we say goodbye to this chapter of our life. First, I want to thank all our teachers and staff for the guidance and support. You have been our mentors and role models, as we are truly grateful for that. To my friends, you made this journey unforgettable. From fun moments to overcoming challenges together, every moment will stay close to my heart. As we move forward, let's cherish these years and stay connected. I wish everyone successful and happy in whatever they path they choose. Thank you for everyone. So, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ज़िंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना हमारी तकदीर में था वरना इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक नहीं होती। So the movement has finally arrived. The time for farewell. The benefit of being head boy is that I got the chance to give this speech. First of all, thank you to all the teachers to survive my tantrums and last minute submissions. I would like to give a tip to my juniors that don't overthink. Marks are important, but memories, drama and fun are even more important, because these days will never come back. So I would like to call Majid. Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. I would like to start with शायरी। ना जाने क्यों सब थम सा गया है, ना जाने क्यों सब थम सा गया है। ये लम्हा, ये मुलाकात, ये जज्बात, जैसे कोई साजिश होने को है, जैसे कोई साजिश होने को है, मानो कोई अपना खोने को है। अब इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा हो गई, हम हिंदी में भी बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले हमारे स्कूल के मैडम्स, जो बेस्ट शानारा मैडम है, फेरुनिसा मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो लोगों ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को कि ये सब चीज़ परफॉर्म कर सके, और इतना बड़ा स्टेज दी है हम लोग को कि हम लोग कुछ बोल सके आगे। तो साथ शुक्रिया मैम, और टीचर्स को भी थैंक यू। थैंक यू टू ऑल टीचर्स जो हमें बहुत सपोर्ट किए यहाँ तक पहुँचने के लिए, और हर चीज़ में हमारा साथ देते हैं। एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय ऑल ऑफ यू। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।